Hello. Assalamu alaikum. We are live now on YouTube, Instagram, and Facebook. और मैं म्यूजिक रोक देता हूँ. So we do already have Spy here with us on the call. But to start, before I start, I would like to share these links on our social media places. So I will paste the link here. Let's wait for everybody to join in. Meanwhile, I will quickly upgrade my camera settings. Maybe it's better now. And until we are waiting here, let's listen to some music for a couple of seconds. How about this? So we have one viewer here. मैंने link share कर दिया है onto our links. Probably we will have a couple of people. मैं ये भी couple of जगह share देता हूँ because this is also useful for us. Share now. Recorded live. No, this one. I will stop this and share this onto my socials. Cool. All right. So we have 4 people here, and people are joining aisa. Meanwhile, Oves bhai, you can maybe talk us something about your weather. जब तक हम 30 seconds wait करते हैं until people can join us. So where are you right now geographically, and what's the weather like there? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So I am in London at this point in time. और वेदर लंदन का जैसा होता है वैसा ही है, टिपिकल रेनिंग Okay. और विंडी. सो वही चल रहा है Windy. अभी. ऑल ग्रे. What about ऑल summers? ग्रे. अभी तो summers का टाइम नहीं है, जून जुलाई. समर्स यार होती हैं, जब होती हैं तो प्रॉपर वाली समर होती है कि कराची की गर्मियां याद आ जाती हैं विदाउट एनी फैन और एसी. लेकिन इस वक्त Okay. लाइक ओकेश वेदर लाइक, लेकिन रेन से काफ़ी परेशान हो गया हूँ मैं. बहुत ज़्यादा हो Okay. गया. Cool. But what about the sun? आई Don't you यूज्ड get the टू sun? लिसन. वी गेट द सन, लेकिन काफ़ी कम होता है यहाँ पे सूरज का निकलना. लाइक यहाँ पे लोग बहुत खुश हो जाते हैं जब सूरज निकलता है. आई एम नॉट पर्सनली फैन ऑफ Okay. सन. लेकिन Okay. यहाँ पे मेरे हाउसमेट्स जो हैं वो लिटरली 3-4 घंटे की सन बात ले रहे होते हैं जब भी सन निकलती है. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ रेयर सन इज इन लंदन. Yes, I can imagine. So until people are still joining, let's wait for 30 more seconds until maybe we have a couple of more people who are joining us. And then once we have everybody, then we can start. Meanwhile, जो लोग यहाँ पर हैं, maybe I can share with you the standard or the presentation which we'll be having or the topics discussion जो हम आज कर रहे होंगे. So I will quickly share up my screen with you guys. Share up a window here. And now yes, so we are live here. Okay, so सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होगा. Okay, who is he, why is he here on the call, और वो किस बारे में बात करेंगे. Second we will talk about is Erasmus scholarship, कि इनको जो Erasmus scholarship मिली थी, he studied in 4 different countries for free. उसके ऊपर क्या सीन था, किस तरह anybody can apply, what are the merits for it, और किधर से अप्लाई करना है, चूज़ कर सकते हैं हम, कौन कौन किस तरह हमें सैलरीज उसके पैसे मिलते हैं जो हम पढ़ाई करते हैं, और ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंसेस इन कंट्रीज, जैसे ये नेदरलैंड, जर्मनी, स्पेन और यूके में रहे, तो इन 4 मुल्कों में एक्सपीरियंस में क्या, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्या पॉजिटिव्स थे क्या नेगेटिव्स थे. देन वी विल टॉक अबाउट वर्क इन यूके, क्योंकि ओवैस अभी यूके में काम कर रहे हैं फॉर एनएचएस, जो कि वहाँ का गवर्नमेंट का नेशनल हेल्थ सर्विसेज, आई थिंक ये फुल फॉर्म है. देन विल टॉक अबाउट ओके वर्क की स्पॉन्सरशिप क्या होती है क्या नहीं होती, बिजनेस ग्रेजुएट की जॉब्स किस तरह की हैं, सीक्रेट जॉब देर, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार हमें वहाँ पे जॉब मिलती नहीं है इतनी आसानी से. वी विल
टॉक अबाउट द सैलरीज, क्योंकि सैलरीज किस तरह है, वहाँ पे लोग लो बॉलिंग करते हैं, आपको कम पैसे देने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर क्या सीन है, डायरेक्ट जॉब आप ले सकते नहीं ले सकते, किधर जॉब्स ढूंढनी है, सीवी किस तरह की बनानी है इफ यू वांट टू फाइंड अ जॉब देयर। एंड लास्ट टॉपिक विच यू विल हैव इज कि में लिविंग कैसी है एज अ स्टूडेंट, अगर आपको रहना है, अगर आपको स्टूडेंट जॉब्स ढूंढनी है, पीआर किस तरह की है, पासपोर्ट कितनी देर है, और अपने पेरेंट्स को बुला सकते हैं नहीं बुला सकते। सो इफ क्विकली यू guys can tell me कि आपको मेरी सही आ रही है and you can see the screen clearly, then maybe we can start right now and get into it. Can anybody tell me about this? Can you hear me properly, Ovais bhai, by the way? Yes, I can. Cool. So let's start maybe and let's Ovais bhai, आप बताएं कि who are you exactly and why did I choose to you be on the call today? Yep. So Uwais Aslam Parvez is my name, as you all know. Right now, I'm working for NHS, which is National Health Service, specifically Hmm. Northeast London NHS Foundation Trust, as a senior procurement specialist. और एकेडमिक बैकग्राउंड की बात की जाए तो मैंने आईबीए से बीबीए किया है और फिर कौन से सन उसके में? बाद आई वाज अ ग्रेजुएट ऑफ 2016 2016. exactly. फिर Nice. उसके And बाद then I worked for Lucky Cement Limited. I interned at PNG twice और फिर I worked for Mondelez International in and Karachi? after that in Karachi, Okay. Pakistan. All of this work experience was in Karachi, Pakistan. फिर उसके बाद I Yes. applied for Erasmus Master Scholarship and then I got selected for that. So फिर उसके बाद Got मैंने Erasmus selected. में yes, my program name was International Masters Global Market Local Creativities, or short form Okay. of it is Global. एक डिग्री थी, 4 डिग्रीज़ थी So, अलग-अलग। so it was a single degree, but in four ओके। different countries. So उसकी वजह से ये है कि degrees हमें तीन universities से मिली हैं और बाकी Netherlands के अंदर I had a summer अच्छा, program. ये नहीं पता था मुझे। ओके, इंटरेस्टिंग। Yes, yes. So I'll tell you the details about the programs in the later section of the conversation. कूल, वेरी नाइस। Abhi, I'm working for Northeast London after a long recruitment journeys. जिसके बारे में भी थोड़ा यस, सा मैं share करूँगा. That's not easy to get a श्योर। job in UK, definitely. ओके, So yeah, that's pretty much all about me. Short, brief introduction. cool. Thanks a lot, Wes bhai. And if you guys have any question, you guys can ask questions on Facebook or on Instagram if I'm live there, and also on YouTube in the comment section, ताकि आपके questions जो होंगे उसी time पे हम लेते रहेंगे। So सबसे पहले let's start and talk about the study Erasmus scholarship. That what exactly is that scholarship about, जो Erasmus Mundus की scholarship होती है, अगर मैं उसको सही तरह pronounce कर रहा हूँ तो। Yeah. So Erasmus Mundus scholarship का सीन इस तरह से होता है जैसे Fulbright is for UK, oh sorry, Fulbright is Yes, for America. इसी तरह से America. Erasmus is for the entire Europe, including UK. Okay. So basically it's a 100% fully funded scholarship और इसके अंदर होता ये है कि programs are little unique as compared to the जो Yes. different programs होते हैं कि specific होते हैं but सही है। इनके अंदर different aspects को cover किया होता है. It's usually it's multidisciplinary, different types of Yes. study routes को उन्होंने merge किया हुआ होता है and there are different partnering universities from different countries of the Europe जो एक consortium form Okay. करती हैं और फिर कंसोर्शियम फॉर्म सही करने है। के बाद वो एक प्रोग्राम आउटलाइन डिज़ाइन करती हैं व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द यूरोप और यूके और उसके हम्म। हिसाब से वो प्रोग्राम को डिज़ाइन करती हैं एप्लीकेशन फॉरवर्ड करती हैं एरास्मस यूनियन के थ्रू वो अप्रूव हो जाता है प्रोग्राम तो उनको फंडिंग्स मिलती है एंड देन दे मार्केट दैट प्रोग्राम ऑन एरास्मस मुंडस कैटलॉग सो यू कैन गूगल Okay. एरास्मस मुंडस catalog and there you can find the list of the programs so I think 40 plus कुछ programs इनके होते हैं मास्टर्स Okay. प्रोग्राम होते हैं एरास्मस के अंदर और भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं लाइक मास्टर्स प्रोग्राम भी है पीएचडी प्रोग्राम्स भी होते हैं और भी डिफरेंट रूट्स होती हैं बट आई नो स्पेसिफिकली अबाउट द मास्टर्स प्रोग्राम सो आई विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दैट सो Okay. आपको इफ़ यू गो ऑन एरास्मस मुंडस कैटलॉग तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यू ईच एंड एवरी प्रोग्राम हैज़ देयर respective designated websites जहाँ पे आप जाके उनकी डेडलाइंस उनकी रिक्वायरमेंट्स और क्या क्या होता है वो सारी डिटेल्स उनके इंडिविजुअल वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन्ड होती हैं सो टॉकिंग Very अबाउट nice. माय प्रोग्राम डू Hmm. यू हैव एनी क्वेश्चन No, no, no. बिफोर आई मूव Continue, continue, फॉरवर्ड please. Okay, Yes, please so go ahead. specifically talking about my program, Global Market Local Creativities, और इसके short form भी होते हैं global.
My program's short form was global. तो आप अगर उनकी वेबसाइट के ऊपर लोकल, जाएंगे ओके। तो वो आपको जो है वो प्रॉपर बताएंगे कि इस प्रोग्राम प्रोग्राम में की क्या चीज़ें हैं? रिक्वायरमेंट्स क्या है। डिफरेंट हुँ, समटाइम्स कुछ प्रोग्राम्स की मल्टीपल स्ट्रीम्स भी होती हैं, लाइक सेम प्रोग्राम बट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, कॉम्बिनेशन ऑफ ओके। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। सो एट माय टाइम ऑफ एप्लीकेशन मेरे प्रोग्राम के अंदर सिर्फ दो स्ट्रीम्स थी, एक पाथवे ए हुँ, था और एक पाथवे बी था। पाथवे ओके। ए जो है वो कवर करता था क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को, हेविली इंटेंसिव ऑन क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, और pathway B was about global marketing and marketing history. So I ओके। chose marketing history, global pathway B. So pathway A और pathway B के अंदर common universities were University of Glasgow as a first semester and University of ओके। Barcelona as a second semester. और फिर pathway A जो है वो for third and fourth semester would go to Rotterdam, University of Rotterdam के अंदर, और pathway हुँ, B would go to University of Göttingen in Germany. इन जर्मनी। Which but right now, as of now, there are 7 different pathways for my program, so you can choose whichever pathway is most interesting towards you, and आपके past life experience, professional experience, and personal experience and academic experience के हवाले से जो सबसे ओके। ज़्यादा आपको interesting program लग रहा है, and you think you could relate more to that particular program, you can choose that pathway. ओके। सो और क्विक क्वेश्चन हियर, तो जो yeah, कंट्रीज़ होते हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, वो मैं खुद चूज़ कर सकता हूँ कि ओके इस पाथवे में ये 3 जो 2 जगहें हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक जगह है फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहूँ मैं पाथवे ए, सी और डी लेता हूँ, तो मुझे इसी हिसाब से कंट्रीज़ या यूनिवर्सिटीज़ असाइन होंगी। यू कैन नॉट चूज, पिक एंड चूज नहीं कर ओके, सकते, वो वेल डिफाइंड ओके। उनके पाथवेज होते हैं। सो फॉर एग्जांपल लेट मी क्विकली टेल यू एज एन एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल ट्रैक ए है, उसके अंदर उन्होंने हुँ, डिफाइन किया हुआ है कि पार्टनर यूनिवर्सिटीज आर यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ ओके, बार्सिलोना एंड एरास्मस सही यूनिवर्सिटी है। रॉटरडैम. So these are the three universities in pathway A, and pathway A is about it's about creative industries, global markets, and creative industries. And then there is a ओके, pathway B, which talks about global markets and development. और उसके अंदर पार्टनर यूनिवर्सिटीज होंगी यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, यूनिवर्सिटी ऑफ बार्सिलोना एंड जॉर्ज ओके, ऑगस्ट यूनिवर्सिटी गुटिंगन विच इज यूनिवर्सिटी ऑफ गुटिंगन. इसी तरह से पाथवे ओके, सी है, डी है, ई, एफ तक है, और जी भी है. ओके। So there are different combination of universities. Some universities are University of Uppsala here in Sweden. There is one University of Kyoto in Japan, हुँ, or University of Los Angeles in Colombia. So you have to choose. एक तो आप it totally depends on you कि आप किस criteria पे choose कर रहे हो pathway track. सही If है। you're interested in that particular country और उसके basis के ऊपर आप identify कर रहे हो, that is your personal choice. Or if you want to study a specific thing, तो आप प्रोग्राम के डिस्क्रिप्शन के हवाले से आप चूज कर सकते हो. So it's totally ओके, up to you. सो You cannot pick and choose different countries and universities. You have to choose ओके, amongst सो the available options. सो व्हाट्स द मेरिट लाइक एग्जैक्टली फॉर दीज टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप? मैं अगर एक हूँ जिसने अभी अभी बैचलर्स किया या बैचलर्स खत्म होने वाला है मेरा फॉर एग्जांपल, Mhm. व्हाट इज द मेरिट फॉर इट? कैन अ guy like me who has a 2.6 CGPA can also apply? Definitely, I would strongly encourage, because merit criteria is not specifically only restricted to academics, though they place a ओके, high percentage to the academic. उन्होंने disclose नहीं किया हुआ कि उनका क्या क्या exact हुआ है? criteria और exact उनकी क्या weightings हैं. But from my personal experiences, I've studied from those people who are in the selection committee of the application. So उनकी तरफ से जो response मिलता है वो ये होता है कि they place a high weightage to academic background, definitely, because ओके, that matters a lot, क्योंकि ये काफ़ी sought after scholarship होती है. एक question I हम्म, was reading, I think I should start my discussion around that question, क्योंकि किसी ने ये श्योर, पूछा था कि इस तरह का कोई contract तो नहीं होता कि जिसमें you have to come back to your home country. तो इस तरह का जिस हम्म, तरह से फुल ब्राइट के अंदर वो contract sign करवाते हैं कि after your masters you have to come back to your home country and spend 2 years over there. तो इस तरह यस, का कोई Erasmus के अंदर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता. यू आर फ्री टू नहीं लिव होता। विद इन द कंट्रीज दैट यू हैव स्टडीड, और वो टोटली आपके ऊपर होता है. तो वो इस आपके तरह ऊपर का होता है, कोई वेरी कॉन्ट्रैक्ट नाइस। नहीं होता. आप मास्टर्स करने के बाद जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. यू कैन कंटिन्यू योर स्टे ओवर देयर सो ऑन अ कमिंग बैक टू ग्रेजुएट द वीजा. मेरिट, कमिंग बैक टू यस. द मेरिट, तो एक तो मेरे पास फॉर श्योर अपनी सीजीपी हो गई विच प्लेज अ ह्यूज रोल। व्हाट अबाउट अदर टेस्टिंग टेक्निक्स लाइक जीआरई, जी मैट,
और क्या-क्या चीज़ें मेरिट में काउंट करती हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर So एक्टिविटीज़, योर वर्क एक्सपीरियंस? या सो सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जीआरई और जीमैट की रिक्वायरमेंट इरास्मस में नहीं है, दे ओनली रिक्वायर ओके। आइल्स। वो भी आपने एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देने की ज़रूरत नहीं होती। इट इज़ मैंडेटरी फॉर योर वीज़ा पर्पस। और अगर हुँ, यूनिवर्सिटी का अगर आपको जो है वो इफ़ इट इज़ यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायरमेंट फॉर द वीज़ा पर्पसेस एज वेल कि आपने आइल्स देना है, तब आप आइल्स दोगे। जब मैंने अप्लाई किया था फॉर द स्कॉलरशिप, उस वक्त आई डिडंट टेक द आइल्स, और मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था ओनली व्हेन आई गॉट टू नो दैट आई हैव बीन awarded with the scholarship, then I took IELTS. So IELTS is not ओके, required. GRE, GMAT is not usually required. Application is pretty straightforward. तो merit के अंदर वो आपका yes academic background देखेंगे, ठीक है? Your work experience would also count, your internship हुँ, experience. If you have done TA-ship और आपने ओके, teaching assistant वगैरह की है, that also helps. Very strong emphasis on the recommendation letters जो कि आपके teachers से या working partner से वेरी मिलता है. They give more weightage towards academic professional giving a ओके, recommendation letter for your application. तो वो जितना अच्छा होगा उतना जो है आपके chances बढ़ जाएंगे. So even if you are lacking in CGPA based, मतलब आपके हुँ, CGPA अगर कम है लेकिन आपके academic reference letters are good and your performance is good and you are a hardworking student, जो कि teacher could येस, testify कि yes, GPA is not representative of his efforts and could contribute well एफर्ट्स, in येस, the classroom, etc. तो उस बेसिस पे अगर वो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज स्ट्रॉन्ग इनफ, तो सबसे पहले वो आपकी पर्सनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे जिसके अंदर यू कैन हुँ, जस्टिफाई कि आपकी जीपीए जो है वो क्यों है। क्यों कम है? एंड आप हाँ, उसके अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ को भी आप डिफाइन कर सकते हो। दे आर लुकिंग फॉर लीडरशिप स्किल्स, वही जो जनरल सॉफ्ट स्किल्स होते हैं मोस्टली वो येस, उसको देखते हैं। एंड दे पुट हाईली एम्फेसिस बिकॉज इट्स सच अ डाइवर्सिफाइड आपका बैच होता है। सो गिविंग एग्जांपल ऑफ मी, हमारे बैच में 32 स्टूडेंट्स थे और आउट ऑफ दोज 32 स्टूडेंट्स 10 लोगों को स्कॉलरशिप मिली थी और बाकी सब ओके, सेल्फ फाइनेंस पे थे। और वो 32 स्टूडेंट्स के डेमोग्राफिक्स इस तरह से थे कि दे वर रिप्रेजेंटिंग 28 कंट्रीज। ओके। So some from And were Europe, they with some from you in America. every other university, or they were scattered for all over the other pathways as well? Yeah, first and second semester we were all together because Okay, pathway A or pathway B में first or second universities are University of Glasgow and University of Barcelona. So we were all together. okay, And then we got separated. So half of our batch went to Rotterdam in Netherlands and half of our batch went to Germany. लेकिन okay, अब as I said, there are multiple tracks. So I think उनके अंदर जो है वो पहले से ही first semester I think सबका University of Glasgow होता है. So all the batches together in University of Glasgow. Second semester onward उनकी जो है वो फिर आगे से बढ़ जाती है. Yes, Sadia Erasmus is fully funded scholarship. It's 100% more than 100% funded. So होता ये है कि आपकी tuition fee is all covered और आपको वो monthly 1000 euro stipend भी देते हैं. cool. और उस स्टाइपेंड के अंदर यू हैव टू डू इट योरसेल्फ, आपने अपनी स्टूडेंट अकोमोडेशन खुद एडजस्ट करनी होती है। सो दे आल्सो टीच यू हाउ टू डू द बजटिंग। सो इट्स नॉट Yes, लाइक कि वो आपके लिए अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करेंगे। दे वुड सजेस्ट कि ये अकोमोडेशन क्लोजर टू यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, बट इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस तरह से बजट कर रहे हो। लेविशली रहना very है तो nice. यू कैन गिव हायर रेंट। सो या इट डिपेंड्स ऑन दैट। Okay, so let's move forward. Wes bhai, thanks a lot for your input. That where exactly to apply? And you already talked about. I think there's a catalog type of a thing. Is it like a job board type of a thing जहाँ पे programs आते हैं? What exactly is it like? So जैसे मैंने कहा गूगल के ऊपर इफ़ यू राइट Erasmus Mundus कैटलॉग देयर वुड बी अ वेबसाइट और उस वेबसाइट के ऊपर आपको जो है वो लिस्ट ऑफ प्रोग्राम मिल जाएगी। देयर आर मल्टीपल फिल्टर्स, आप अपने कंट्रीज़ के बेसिस पे भी फ़िल्टर कर सकते हो। दैट विल बी ग्रेट इफ़ यू कैन शो इट लाइव। Okay, so I will take. मैं अपनी screen share की हुई है also, so you can see या we have a catalog thing here और यहाँ पर जाके you can search for your master's program, maybe the requirements as well, and so on and so forth. We can filter. Nice. Serbia, Greece दैट और इज़ Romania में करेक्ट। है. Cool, very दैट इज़ nice. करेक्ट। Thanks a lot सो for आप this. जो है वो फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द कंट्री, फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रेफ़रेंस ऑफ स्टडी। सो आप अपना प्रीवियस फ़ील्ड ऑफ स्टडी भी मेंशन कर सकते हो, उस बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करके आपको प्रोग्राम्स बता देगा।
Then all the Cool. programs have hyperlink to their independent websites. So आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाओगे और वेबसाइट के ऊपर डिटेल के अंदर उन्होंने कैलेंडर भी दिया हुआ सारी होगा चीज़ें कि लिखी क्या जो है वो हुई। वेरी एप्लीकेशन नाइस। डेडलाइंस हैं, व्हेन वुड द एप्लीकेशन बी ओपन, हाउ टू अप्लाई के भी डॉक्यूमेंट होगा पीडीएफ के अंदर, गिविंग यू द इंटायर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑफ हाउ टू अप्लाई, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज और क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होंगी, सारा कुछ डिटेल्स उन्होंने इंडिविजुअल अपनी वेबसाइट्स के ऊपर मेंशन किया हुआ होता है. How much EU grant did you get exactly? Because here it's like 4 million euros or what? Yes. So this 4 million euro is the EU grant for that particular program for the entire period of the program. So program Okay. की Okay. approval होता है. I think हर 3 साल बाद it Yes. applies for reapproval and then they share the profiles of their passed out students and then they again ask Okay. for the extended grants. लेकिन जो students को grants दिए जा रहे होते हैं उसके अंदर tuition fee is 100% off and tuition fee varies from university to university. So Okay. हम लोग we totally do not think about that कि उसके कितना एक्सपेंस होगा, लेकिन हर यूनिवर्सिटी हर प्रोग्राम के ऊपर आपको डिटेल में लिखा हुआ होता है कि ट्यूशन फ़ी कितनी होगी अगर आप सेल्फ फाइनेंस स्टूडेंट के तौर पे जाना चाह रहे हैं, इफ़ यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप. सो होता ये है कि आप जब एप्लीकेशन अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन के अंदर ही उन्होंने एक चेक बॉक्स होता है जो कहता है कि डू यू वांट टू गेट कंसिडर्ड फॉर द स्कॉलरशिप. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डू. और वो आप चेक मार्क करते हो तो आपकी एप्लीकेशन स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर हो जाती है. So when you apply, do you have a Okay. question? So we have a question here. Can you read? So we do we Yeah, have to to apply apply. separately to the university as well for the master's program, or just applying for the scholarship will suffice? या सो होता ये है कि जैसे मैंने बताया कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं. उन उस कंसोर्शियम ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक यूनिवर्सिटी होती है जो कि आपकी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी होती है, जो कि आपकी Hmm. डायरेक्ट Main university फर्स्ट होती है सेमेस्टर kind में of. आप जा रहे हो, जो कि या आप कह सकते हैं कि वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ को लीड कर रही होती है. तो Okay. आपने जो अप्लाई करना होता है वो उस यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना होता है. सो एज आई सेड कि हाउ टू अप्लाई की गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने कम्प्लीटली बताया हुआ होगा कि आपने इस यूनिवर्सिटी में जाके अप्लाई करना है. सो वो पोर्टल के ऊपर Hmm. आपने जैसे फॉर एग्जांपल माय प्रोग्राम यूनिवर्सिटी वाज यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो. सो आई हैड टू गो ऑन Yes. यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो's वेबसाइट. उनके पोर्टल के ऊपर जाके मुझे ये वाला मास्टर्स प्रोग्राम सेलेक्ट करके अप्लाई करना था. सो नो यू डू नॉट हैव टू अप्लाई फॉर ऑल सेपरेट यूनिवर्सिटीज, दे आर ऑल इंक्लूसिव इन वन प्रोग्राम यूनिवर्सिटी. सो आप एक ही जगह पे अप्लाई करते हो. Okay, so we have another question here from Osama Usman, and he asked कि लोकल की वेबसाइट पे तो एप्लीकेशन अब बंद हो गई हैं. When will they open again? फॉर द प्रोग्राम आई थिंक उनका स्टार्ट जो है वो सितंबर में होता है. सितंबर के अंदर सितंबर अक्टूबर के अंदर वो एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं और डेडलाइन जो होती है वो यूजुअली उनकी जनवरी के अंदर होती है. 6th और 8th ऑफ जनवरी यूजुअली वो रखते हैं डेडलाइन. और हर डिफरेंट ट्रैक्स की जो है वो डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं. सो गेट रेडी फॉर सितंबर. आई थिंक सितंबर के अंदर वो खोलते हैं एप्लीकेशंस. Cool. Let's move forward, and I would like to ask you कि payouts किस तरह मिलते हैं when you get the money, for example, आपको assign हो गया, let's say. Do you get it monthly? Do you open an account? How does that work exactly? और आपको क्या फ्लाइट टिकट भी मिलता है? सो होता ये है कि हम लोगों को जो पे आउट था एक तरीके से होता ये है कि 3,000 यूरोस पर ईयर वो एक्स्ट्रा देते हैं अपार्ट फ्रॉम 1,000 यूरोस पर मंथ. तो वो होता Month. है आपकी Okay. ट्रैवलिंग वगैरह के एक्सपेंसेस के लिए. लेकिन जब Cool. फॉर एग्जांपल यू गेट सेलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप, अभी जो आपने वीज़ा Yes. की फ़ी देनी है वो आपको खुद पे हम्म. करनी होगी बट यू विल गेट सही इट है. रीइंबर्स. सो आपको जो 3,000 यूरोस मिलेंगे वो बेसिकली आपको जब आप यूके आ जाओगे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर आप स्टार्ट कर दोगे, आप अपना बैंक अकाउंट खोलोगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स अपनी प्रोग्राम मैनेजर के साथ शेयर करोगे, देन वो हम्म. रीइंबर्समेंट होगी. आपको 3,000 यूरोस का जो यूरोस की. फंडिंग थी वो आपको वापस आएगी. So basically visa fee and flight fee you'll have to do it yourself. आप लोन ले सकते हो हम्म. और फिर आपको जैसे ही वो यूरोस के अंदर मिले आप you can refund it to whosoever you have taken the money from. So Okay. 100% है, but at the time of application they would not transfer the funds to your Pakistani local bank account. You'd have to go there Okay. physically, open the bank account और फिर वहाँ पे फंडिंग आना शुरू होगी. और फिर मंथली Okay. बेसिस के ऊपर we used to get on every 27th of the month we would get the Cool. 1,000 euro 1,000 euros. direct debited to our accounts. Okay, understandable. And how was your overall experience getting this scholarship? Because you studied in 4 different countries, but academically, Yeah. did you
upskill yourself, or how was it like overall experience? Would you say this? Overall experience was very robust, I would say. University of Glasgow में Okay. जाके एक shock लगा था, to be very honest, because कभी भी Okay. academic reading, academic writing इतनी strict plagiarism rules वगैरह के साथ मैंने IBA में नहीं की थी, to be very honest. और Hmm. BBA के अंदर specifically हम लोग इतनी ज़्यादा academic reading और academic writing नहीं करते. Usually presentation based होता था, but यहाँ पे Glasgow के अंदर it was literally reading intensive था. हमारा first semester was 2.5 month और हमारे Okay. पास 5 courses थे. One course was related to language, foreign language, so Spanish लिया हुआ था Hmm. हमने. और literally it wouldn't be wrong to say कि हम लोगों को daily basis पे 350 pages की reading करनी होती थी to go into the class, Okay. to prepare for the class. So it was very reading intensive और discussions होते थे और फिर class participation के marks as such नहीं होते थे, but it had like a high impact towards your final grading. और जो grading होती थी वो हमारा assignment based होती थी, वो again essay लिखना होता था, which is again Okay. academic writing. So Academic. Yes. I struggled a little bit at the very start of the semester to read because I was not very Hmm. avid reader at that point in time. और फिर आपने citing different, library के अंदर बैठना, different sort of journals and catalogs को explore करना और फिर उससे पढ़ के फिर आपने अपना opinion को जो है वो present करना. So that was very academic intensive. So Okay. usually UK के अंदर लोग मास्टर्स प्रोग्राम वगैरह के लिए आते हैं एंड दे थिंक कि हम लोग साथ में काम भी कर सकते हैं. Erasmus के अंदर इट्स अ लिटिल डिफरेंट बिकॉज आप एक जगह पे बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होते हो. सो यू Hmm. कीप ऑन स्विचिंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर Switching. कंट्री और Yes. आपकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं. क्या आपने अकोमोडेशन बुक करनी होती है, फिर आप सेटल Yes. होने ही लगते हो कि आपके पास असाइनमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं. Exactly. और इवन इफ़ यू थिंक कि मैं साइड में कुछ काम छोटा मोटा कर लूँ, सो उसके लिए भी यू हैव टू थिंक लाइक people do people do Okay. from our batch. So there were some people who were able to do some sort of like odd jobs के restaurants के Odd jobs. अंदर काम Hmm. कर लिया, odd jobs कर ली. वो एक माइंडसेट uh, होता है ना कि यार पैसे आ रहे हैं, बट और पैसे भी आ सकते हैं, तो क्यों ना लूं मैं और पैसे. पैसे भी आ सकते हैं. एग्जैक्टली. सो ऐसा नहीं है कि आपको जॉब पैसों की कमी होगी. सो आई वाज बेसिकली सेविंग क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज मैंने अपना Okay. जो हाउसिंग बजट था वो बहुत लो रखा हुआ था. एंड आई वाज लाइक वेरी लकी इनफ कि मुझे इस तरह के अकोमोडेशन मिल गए थे जो कि ऑलमोस्ट लाइक Cool. 80% ऑफ माय Hmm. रेगुलर जो बैचमेट्स थे वो जो पेमेंट कर रहे थे. सो आई वाज एबल टू सेंड मनी बैक टू पाकिस्तान एज वेल फ्रॉम माय Yes. स्कॉलरशिप स्टाइपेंड. So that is also pretty much possible. Cool. So we have a question here from Sadia Salim, and she is asking, can you tell us something about the selection process? Does it have an interview, for example, or how does that look So like? there is no interview. The only selection criteria is your CV जो आपने application के साथ upload करनी होती है. आपकी personal statement होती है, I think 1500 words की personal statement होती है जिसके अंदर उन्होंने detailed question दिया हुआ होता है कि आपने जो है वो किन areas के ऊपर focus करना है. So वो उन्होंने bullet points Okay. में mention किया होता है कि इन criterias को आपने अपने personal statement के अंदर define करना है. ठीक है. So वो 1500 words की जो personal statement है वो प्लस आपके जो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन फ्रॉम योर प्रोफेसर्स और योर वर्क मैनेजर हैं वो और योर CV. दीज आर द ओनली 3 थिंग्स ओवरऑल जिसके Hmm. बेसिस के ऊपर वो सिलेक्शन करेंगे. सो मेक श्योर कि आपकी जो 1500 वर्ड्स का पर्सनल स्टेटमेंट है दैट इज ऑल यू आर प्रेजेंटिंग योर एंटायर लाइफ इन फ्रंट ऑफ देम एंड सिंस देयर इज नो Okay. इंटरव्यू. So that is the only thing, that That is the is the only only chance you thing. have to, Yeah, makes sense. yeah, Makes sense. you have to, We have yeah. another question here from YC, and he or she is asking about a CS graduate. Can a CS graduate apply with a fair CGPA and who has no work experience and no extracurricular activity? Definitely. So, if you are talking about my specific program, which is Global Hmm. Market Local Creativities, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया 32 हमारे बैचमेट्स थे. Yes. कुछ लोग लॉ डिग्री के थे, कुछ लोग मैथमेटिक्स डिग्री के थे, कुछ बिजनेस Hmm. डिग्रीज के थे, कुछ आर्ट्स के थे. और एक बहुत इंटरेस्टिंग कैंडिडेट थी हमारी, वो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के आई Okay. थी. Very तो nice. उनके लिए थोड़ा सा रेलेवेंट था कुछ चीज़ों के अंदर. एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट था हमारे साथ और एक टिपिकल हार्डकोर फाइनेंस ग्रेजुएट था और एक Okay. कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट भी था. यस.
So they do not really care कि आपका background क्या है. They just consider कि how you are justifying कि आपका background किस तरह से help out करेगा in the class discussions, and how you would bringing your diverse experience, academic, professional, and personal, to the classroom, and how it would benefit the overall program, and Cool, how very it nice. would, stepping stone towards your career aspiration. All right, so we have For CS graduates के लिए, I think there are hmm. also different Erasmus programs also available for CS graduates. So if you are planning कि आप computer science specific field के अंदर कोई master program करना चाहें, तो I'm sure उस तरह के भी program हैं. Cool. And before I dive into more questions we have from the chat, I would like to ask you, since you are already at the topic, okay, how was your experience in these four different countries? Because the countries which are mentioned on the top, Netherlands, Germany, and Spain, were part of the EU, right? But UK was a completely different ball game because वहाँ पर English चल रही थी. So how was your experience like between these four and what did you learn from it? So I was a lucky one. हमारे बैच में ऐसा होता ये है कि आपका जो 2 years का प्रोग्राम है, आफ्टर 1 year Hmm. एक आपका समर स्कूल भी होता है, विच इज़ अगेन फुली फंडेड. उसके अंदर वो Okay. ट्रैवल एक्सपेंस वगैरह भी स्टाइपेंड अलग से देते हैं. सो समर Hmm. प्रोग्राम इज़ यूजुअली इन डिफरेंट कंट्री. सो हमारा जो समर प्रोग्राम होना था फॉर आवर प्रोग्राम, वो था इन गडांस्क इन पोलैंड, डांस Hmm. इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, समथिंग लाइक दैट. सो वहाँ पे हमारा Yes. होना था, जो कि प्रोग्राम के अंदर डिफाइंड था, बट कोविड Hmm. हैपेंड. सो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगा एज़ कम्पेयर टू द न्यू स्टूडेंट्स, बिकॉज मेरा मास्टर्स व्हेन आई वाज इन बार्सिलोना, एक महीना गुजार के बार्सिलोना के राइट आफ्टर दैन कोविड हिट हो गया था. सो हम लोग बेसिकली वी आवर एक्सपीरियंस इज़ अ लिटिल डिफरेंट, क्योंकि हम हाइब्रिड भी हो रहे थे. वी वर दी Hmm. टेस्टिंग सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि हाइब्रिड स्टडीज़ की तरफ मूव कर रहे थे, कि ऑनलाइन भी है और फिर Yes. इन क्लास भी हो रही है, मास्क के लिए ख्याल रखना है, और लॉकडाउन वगैरह के अंदर भी है. सो आई वॉज अ लकी वन बिकॉज आई गॉट सेलेक्टेड फॉर माई प्रीवियस बैचेस summer program, which was in Okay. Rotterdam in Netherlands. So I was Hmm. selected for that. Okay. और वो मेरे मास्टर प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले होना था. सो मैं Okay. अपने मास्टर्स प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले नेदरलैंड्स गया था, और फिर वहाँ पे Okay. मैंने सेपरेट वीज़ा लगाया था, और लकीली इनफ दैट वाज अ फ्री फुली फंडेड वीज़ा इज़ फ्री फॉर नेदरलैंड्स. अगर आप किसी समर स्कूल या इस तरह के शॉर्ट ट्रिप के स्टडी ट्रिप के ऊपर नेदरलैंड्स जा रहे हो, तो दैट वीज़ा वाज फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मी. बट वैसे सो मुझे आप ये नेदरलैंड. बताएं कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज which are which speak their own language versus या the life experience or study experience, let's say लाइफ में इन हम आ यूके. जाएंगे, बट स्टडी एक्सपीरियंस इन द यूके. सो स्टडी एस्पेक्ट से तो इट वाज ऑल सेम, बिकॉज द लैंग्वेज ऑफ स्टडी वाज इंग्लिश. और हम्म. हर सेमेस्टर के अंदर हम लोगों को एक लैंग्वेज कोर्स अलाउड होता था. सो ओके. क्लास को स्पेनिश कोर्स, ताकि थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन के अंदर आसानी हो जब हम बार्सिलोना में जाएं. सो यूके वाज नॉर्मल, इट वाज सिमिलर, बट यस हम्म. स्कॉटलैंड के अंदर स्कॉटिश एक्सेंट इज अ बिट डिफरेंट. सो थोड़ा सा ओके. एक वीक तक थोड़ी सी परेशानी थी कि यार क्या बोल रहे हैं ये लोग सब इधर उधर. ओके. बट जैसे जैसे रहता गया, सो वो एडजस्ट हो गए थे. सो लेकिन बार्सिलोना के अंदर, द टाइम दैट आई स्पेंट इन बार्सिलोना, वहाँ पे भी इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए हम अप्लाई करने की कोशिशें कर रहे थे, बिकॉज इसके अंदर वो भी होता है, वर्क प्लेसमेंट्स भी होती हैं. सो ओके. आफ्टर इन द समर टाइम हम लोगों को एक ऑप्शन होता है कि या तो आप एक्स्ट्रा कोर्सेज ले लो, लर्निंग एंड हम्म. डेवलपमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के कोर्सेज ले लो, या आप कंसल्टेंसी करो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. तो वो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ओके. दे देते हैं, और जिसके अंदर यू हैव टू डू अ फिजिकल वर्क. सो बार्सिलोना के अंदर हम्म. वी फेस दैट प्रॉब्लम क्वाइट अ लॉट, कि हम जब वर्क एक्सपीरियंस वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वर आस्किंग फॉर स्पेनिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स. सो ये ओके. एक बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस थी बार्सिलोना के अंदर. एंड व्हाट अगर अबाउट इन कोई और जर्मनी एंड नेदरलैंड्स? डिड यू आल्सो फील दिस? जर्मनी के अंदर भी, यस दैट वाज ट्रू. सो फॉर माय फील्ड स्पेसिफिकली, लाइक जो बिजनेस रिलेटेड स्टडीज यस. हैं उसके अंदर, बिकॉज यू हैव टू कम्युनिकेट, तो वो रिक्वायरमेंट के अंदर उन्होंने मेंशन किया था. सो व्हेनेवर आई वाज अप्लाइंग फॉर जॉब्स और हम्म.
इंटर्नशिप्स, तो उसकी मेन रिक्वायरमेंट यही होती थी। देयर वर सम ऑप्शंस जो कि ओनली इंग्लिश स्पीकिंग होते हैं, लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड जैसे कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिक है तो उसके अंदर चांसेस, टेक्निकल अगर आपकी फील्ड है तो उसके अंदर इंग्लिश हम्म स्पीकिंग इज़ वेरी इजी टू गेट द जॉब्स। बट फ्रॉम मैनेजमेंट परस्पेक्टिव, अगर आप मैनेजरियल पोजीशंस वगैरह के अंदर टारगेट कर रहे हो तो हम्म it becomes difficult as compared to normal. और मेरा experience would be a little different as compared to others यस because मैं जिस वक्त जर्मनी में था, it was a total lockdown. So वैसे यस ही वर्क फ्रॉम होम और वो वाली सारी चीज़ें थी, कोई रिक्रूटमेंट ड्राइव नहीं थी, पीपल वर नॉट, लिटरली वहाँ पे ज़ीरो एक्टिविटीज़ हुई थी जॉब्स वगैरह की भी, और ओके जॉब्स भी रुके हुए थे। So my experience in Germany was different as compared to others. For example, you can talk better about German experience because you are living there. So आपको पता होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे यस क्या सिचुएशन थी और अब क्या सिचुएशन है। मैंने तो बस लॉकडाउन ही मेक literally है। So when I was in Germany, I was in my room only. There was nothing. ओके All total lockdown. all right so let's move forward and I would like to before we jump into the topic about work in the UK I would like to address a question here Sadia no Ruj Fatma has asked that she has gotten an admission in University of Glasgow as a self-funded law master's student. Are there any chances of what are the chances of securing a scholarship in this time period? Any Um, idea about this? for masters in law. So होता ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के अंदर इरास्मस के लिए भी आप अगर अप्लाई करेंगे तो 99% स्टूडेंट्स को सेल्फ फंडेड के लिए वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। Okay. तो आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर आ जाएगा, कंडीशनल लेटर आ जाता है कि आप जो है वो सेलेक्टेड हैं और स्कॉलरशिप के लिए डिसीजन के लिए आप वेट करें। If you are not talking about Erasmus scholarship, because I don't know if there is any specific program of Erasmus for law master's degree, I'm not sure of that. लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के लॉ मास्टर्स प्रोग्राम में आपने अप्लाई कर लिया है, so there are some university specific scholarships also, तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, बट आई एम afraid they are not 100% fully funded. Usually वो Hmm. 50%, 80%, 60% based on your application होती है। उनका application criteria different होता है, different types of programs होते हैं, उनके लिए आपको separately apply करना होता है। It's not like Erasmus scholarship जो एक ही application में आपकी scholarship भी consider हो रही है, Oh, तो वो आपको independently अलग से apply करना होगा for those independent scholarships. all right. So I would like to move forward now to our. अभी हमने बहुत Erasmus के ऊपर बात कर ली. Now let's talk about some work life in UK. Since what happened is that after finishing your degree, because I think Jamal has asked this question, and this is very relevant here as well. कि after finishing your Erasmus scholarship or program, can you get a work visa? How does that work exactly? So आपने भी वही काम So किया था. Maybe you can talk some about. yeah, I can talk about that. So since we are working, we are studying in 3 different countries, 4 technically, तो आप Hmm. हर कंट्री में रहते हुए आप एक्सपीरियंस कर सकते हो और आपको पता चल सकता है कि यार ये कंट्री मेरे लिए बेहतर है और या दूसरा। सो जब आप ग्लोबल प्रोग्राम के लिए फॉर इंस्टेंस अप्लाई करते हो तो उनकी रिकमेंडेशन ये होती है कि आप जो वीज़ा, सिंस हमने रहना सिर्फ 2.5 महीने के लिए है, तो कुछ मेरे Yes. बैचमेट्स ने 6 महीने का वीज़ा के लिए अप्लाई किया था यूके का, लेकिन दे Okay. स्ट्रांगली रिकमेंडेड कि आप 2 years का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करें राइट अवे at the Okay. application. So I applied for a Hmm. 2 years visa. उस स्टूडेंट वीज़ा के बेसिस के ऊपर आई केम टू यूके और फिर मैंने बैंक अकाउंट्स वगैरह खोले थे और उसी बैंक अकाउंट के अंदर आपके यूके बैंक अकाउंट के अंदर ही स्टाइपेंड आता रहता है थ्रू Hmm. आउट। फिर जब मैं बार्सिलोना गया था, बार्सिलोना वाज अ टेम्परेरी 6 month वीज़ा, तो उसके अंदर Okay. यू कैन नॉट अप्लाई फॉर वर्क परमिट और एनीथिंग लाइक दैट बिकॉज वो Okay. टेम्परेरी स्टडी वीज़ा है, उसके अंदर यू कैन नॉट अप्लाई। जर्मनी के Hmm. अंदर मुझे 1 साल का स्टूडेंट वीज़ा मिला था, विच Okay. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हो एज अ जॉब सर्च वीज़ा जो जर्मनी का होता है। Hmm. अगर आप रह रहे हो एंड यू आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स एंड इफ़ यू प्लान कि आप जो है वो जर्मनी के अंदर ही वर्क वीज़ा वगैरह लेना चाह रहे हो, तो जर्मनी के अंदर Yes. रहते रहते आप अपना स्टूडेंट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकते हो फॉर वर्क सर्च वीज़ा। सैफू कैन Okay. Job search टॉक visa. मोर Yes. अबाउट दैट। जॉब सर्च वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हो जर्मनी में रहते हुए। At my time when I was in Germany, I couldn't do that because of COVID. हम लोगों को Okay. सिटी रजिस्ट्रेशन में ही 4 महीने लग गए थे। 4 महीने जर्मनी में Okay. रहने के बाद हमारी सिटी सिटी रजिस्ट्रेशन हो गई थी, तो वीज़ा तो Welcome to आप हो नहीं Germany. सकता, बहुत ज़्यादा था, बैकलॉग बहुत ज़्यादा था, सो वी कैन नॉट टेक्निकली अप्लाई फॉर वर्क वीज़ा और जॉब सर्च वीज़ा क्योंकि बैकलॉग बहुत ज़्यादा था।
और हम्म। यूके का सीन ये था कि फिर जर्मनी के बाद जब मेरी जर्मनी के अंदर थीसिस मैं लिख रहा था, तो थीसिस लिखने के लिए मैं पाकिस्तान आ गया था, बिकॉज इट वाज नो ओके। पॉइंट टू स्टे इन वन सिंगल टू रूम स्टे। एंड या। देयर इज़ नो क्लासरूम, फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रही है, तो मैंने पाकिस्तान में आके अपनी थीसिस लिखी थी। उस हम्म। वक़्त यूके की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को रेड लिस्टेड किया हुआ था, और फिर उसके थोड़े टाइम बाद मतलब आई कुडंट ट्रैवल बैक टू यूके। तो हमारा ये भी थोड़ा-सा डाउटफुल था उस टाइम पे कि यार यूके वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो होता ये है कि आपका सिंस आई ऑलरेडी हैड 2 ईयर ऑफ वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा इन द हम्म। यूके, वो मेरा एक्सपायर हो रहा था। आई ग्रेजुएटेड इन सितंबर 2021 और यस। मेरा जो वीज़ा था जो स्टूडेंट वीज़ा था वो जनवरी तक वैलिड था 2022 के, ओके। ठीक है? ओके। वो इसलिए एक्सटेंडेड रखते हैं कि आपकी जो कॉन्वोकेशन होगी, जो आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी, वो आप अगर यस। फिज़िकल हो रही है तो आप अटेंड कर सकें, वो नवंबर में, दिसंबर में होगी। हम्म। अप ओके। अंटिल सितंबर एंड वी वर नॉट श्योर कि हमारी ग्रेजुएशन सेरेमनी हो रही है या नहीं हो रही है, बिकॉज ऑफ कोविड, वो फिजिकली हो रही है या नहीं हो रही है। बट हमें नवंबर के स्टार्ट में हमें बताया गया कि येस इट इज़ हैपनिंग फिजिकली ऑन 31st ऑफ ओके। नवंबर, सो दोज हु कैन कम। सितंबर मिड में पाकिस्तान येलो एम्बर लिस्ट में ट्रांसफ़र हुआ था, एम्बर सो दैट लिस्ट में आ मीन्स गया, अब जो यस। है वो अब जो है वो आप ट्रैवल कर सकते हो, और वो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने गवर्नमेंट होस्टेड फैसिलिटीज़ को परचेज़ करना था। आई थिंक फैसिलिटी में रहना है, £2500 यस। थे 10 या। डेज़ रहने के, तो दैट वाज़ एन ऑप्शन। सो आई ट्रैवल बैक टू यूके, और फिर यूके जाके मैंने कॉन्वोकेशन अटेंड की। फिर उसके बाद ओके। क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे रिक्रूटमेंट ड्राइव्स ऑलरेडी मिस कर दिए थे, व्हिच वुड बी डिफरेंट फॉर यू गाइस, या। दोज़ हू आर पोटेंशियल कैंडिडेट्स। तो आप अपने जर्मनी या लास्ट सेमेस्टर के जो वो होंगे, उसमें आप अपने रिक्रूटमेंट ड्राइव्स के अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हो इन जर्मनी, अगर आप जर्मनी में कूल। हो तो। साथ ही साथ आप यूके के रिक्रूटमेंट ड्राइव्स में भी साइमल्टेनियसली पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो टॉकिंग अबाउट द पीपल फ्रॉम माय प्रीवियस कोहोर्ट, what they did was they were in हम्म। Germany, they were applying for German recruitment drives जो भी आपके हो रहे होते हैं during your last semester, और साइमल्टेनियसली वो या। यूके में भी अप्लाई कर रहे थे, और जब उनके असेसमेंट डेज थे या उनके फिजिकल प्रेजेंस ऑफ इंटरव्यूज रिक्वायरमेंट थी, तो वो सिंपली फ्लाइट लेके चले जाते थे टू द यूके, क्योंकि ओके। वीज़ा तो उनके पास मेक ऑलरेडी था, सेंस, और वो यस। पार्टिसिपेट करके वापस आ जाते थे। वापस सिलेक्शन आ अगर हो जाए, मेक जाता था तो सेंस। आफ्टर वो फिर यूके में मूव कर सकते थे। सो हम्म। सॉरी। So there is always a So, possibility. yeah, so quick question, when we have this Yeah, study visa, उसके बाद अगर मेरी कहीं जॉब लग जाती है यूके में, फॉर एग्जांपल फॉर विद यू इन योर केस स्पेसिफिकली, अगर यूरोप में तो आपने बता दिया कि यार ओके मेरी जॉब लग गई सिंपली, अगर मेरी जॉब लग जाती मेरे पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होता तो आई वुड हैव गॉटन द थिंग, बट इन यूके इट्स अ बिट डिफरेंट, राइट? सो हाउ डिड दैट that टर्न is आउट फॉर correct. यू? सो यूके के अंदर हमारे ही टाइम पे वी वर द फर्स्ट बैच जब वो पोस्ट ग्रेजुएट वीज़ा जो आपका होता है वो स्टार्ट हुआ था, रिन्यू हुआ था। सो मोस्ट ऑफ द हम्म। ऑर्गेनाइजेशन वर नॉट अवेयर ऑफ दैट, सो इसलिए भी हमें थोड़ी सी ओके। प्रॉब्लम हो रही थी ड्यूरिंग रिक्रूटमेंट टाइम्स कि भाई वी आर ऑन ग्रेजुएट वीज़ा। सो हम्म। सर जनवरी के अंदर मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा था, बट आई अप्लाइड इन ओके। नवंबर। जैसे ही मैं यूके आया था, यूके आते ही मैंने अप्लाई कर दिया था फॉर 2 इयर्स एक्सटेंशन ऑफ माय ओके, वीज़ा, मेक व्हिच सेंस। इज़ कॉल्ड ग्रेजुएट राउट वीज़ा। तो वो आपका ओके। बेसिकली जॉब वीज़ा ही होता है, बट इट्स सिमिलर टू स्टूडेंट वीज़ा। यहाँ पे एक चीज़ मैं हाइलाइट कर दूँ, अगर आप स्टूडेंट थे और आपने अपने हम्म। डिपेंडेंट्स का वीज़ा लगाया हुआ था, आपकी वाइफ ओके। या किड्स का, तो यस। आप ग्रेजुएट वीज़ा के अंदर जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस भी ट्रांसफ़र होगा। अगर आप स्टूडेंट के टाइम पे आपने अपने डिपेंडेंट्स का वीज़ा नहीं लगवाया था, तो ग्रेजुएट वीज़ा पे भी आप अपने डिपेंडेंट का वीज़ा नहीं लगवा सकते, व्हिच ओके, वाज़ अ थिंग अंडरस्टैंड। till 3 months ago, but now the new ओके। UK government has announced कि स्टूडेंट वीज़ा पे और ग्रेजुएट वीज़ा पे you cannot apply for the visa of your dependents at all. ओके। ओके। स्टूडेंट वीज़ा पे अलाउड था, बट अब उन्होंने बंद कर दिया है। बन गए। So ओके। this is one thing तो that you नाइस। should be aware of. Yeah. कूल। So सो I got my या। graduate visa, और फिर graduate visa हुँ। के basis के ऊपर you can keep on applying on different organization and request them to यस। issue the sponsored visa, which is a skilled worker visa. ओके, सो लेट्स डाइव इनटू दिस टॉपिक बिकॉज़ हम आधी डिस्कशन कर चुके हैं रिगार्डिंग आवर टॉपिक्स इन आवर लाइव सेशन, एंड द नेक्स्ट हाफ इज़ अबाउट वर्क इन द यूके एंड हाउ अ पर्सन कैन सिक्योर देयर जॉब, क्योंकि मैंने हमेशा उस बंदे से मसला सुना है जो यूके में रहता है कि यार मुझे स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही, मुझे कंपनी स्पॉन्सर नहीं कर रही, मैं बहुत आजकल मसले में हूँ। व्हाट एग्ज़ैक्टली इज़ दिस स्पॉन्सरशिप थिंग एंड हाउ हार्ड इज़ इट टू गेट फॉर पीपल?
Yes, it is tough. यूके के अंदर स्पॉन्सर्ड वीज़ा लेना, विच इज़ कॉल्ड स्किल्ड वर्कर वीज़ा, टीयर 2 भी कहते हैं इसको। हम्म। उसमें होता यह है कि कंपनी इशू करती है आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, ठीक है, जिसकी कॉस्ट ओके। 200 पाउंड होती है। इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव थिंग। द थिंग इज दैट कंपनी को 1000 पाउंड पर एनम पे करना होता है होम ऑफिस को टू स्पॉन्सर सम फॉरेनर। एंड वी, डिस्पाइट बीइंग अ ग्रेजुएट फ्रॉम यूके, हम लोगों को भी इमिग्रेशन का जो सरचार्ज होता है वो पे करना होता है ऑर्गेनाइजेशंस को टू द होम ऑफिस। क्योंकि ये एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, इसलिए यूजुअली कंपनीज अवॉइड। और अगर उनके कैंडिडेट पूल्स के अंदर कोई ब्रिटिश नेशनल है या ब्रिटिश रेजिडेंट है तो वो हम्म। उसको प्रायोरिटी देते हैं, दो दे हैव मेंशन वेरी ब्यूटीफुली कि वी आर इक्वल एम्प्लॉयर एंड ब्ला वी ब्ला आर ब्ला। इक्वल, यस। बट अगेन एचआर वगैरह की पॉलिसीज को देखते हुए और कि कितने प्रोसेसेस, और बिकॉज 5 इयर्स के लिए भी अगर वो वीज़ा देते हैं या 3 इयर्स के लिए देते हैं, फिर वो हम्म। एक्सटेंशन का भी एलिमेंट आएगा। एंड दे हैव नॉट टेस्टेड यू, दे आर नॉट श्योर हाउ योर परफॉर्मेंस इज गोइंग टू बी। सो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं, अनलेस द ऑर्गेनाइजेशन इज बिग इनफ, फॉर एग्जांपल केपीएमजी और इस तरह के बिग हम्म। फोर्स वगैरह या बिग मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, उनके अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो देयर आर फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस जो कि स्पॉन्सर कर देती हैं इजीली, बट देयर रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज क्वाइट टफ ओके। एंड लेंथी। सो सो लेकिन माय ये हजार रिकमेंडेशन वुड बी हजार पाउंड ज़्यादा तो नहीं है ओएस भाई? 1000 पाउंड पर ईयर पर ईयर होम तो ऑफिस ज़्यादा तो वालों नहीं को है? पे करने होते हैं फॉर द कंपनी। फॉर कंपनीज दे आर, आई डोंट नो व्हाई। सो वो व्हाट डू यू इसलिए मीन जो बाय है होम वो ऑफिस? लाइक कंपनी को पे करने होते हैं टू द होम ऑफिस लाइक द गवर्नमेंट? टू द गवर्नमेंट, यस। जो होम ऑफिस इज ओके। बेसिकली द वीजा इशूइंग अथॉरिटी। और जो ओके। वीजा की फी होती है दैट इज सेपरेट। वीजा की फी इज सेपरेट, सो ओके। आई थिंक इट्स 721 पाउंड्स पर ओके। एप्लीकेशन। और फिर आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज विच इज अ हेल्थ इंश्योरेंस जो है आपको ईयरली पे करना होता है। सो ओवरऑल इफ आई से फॉर 3 इयर्स एक बंदे की वीजा एप्लीकेशन कॉस्ट इज गोइंग टू बी 2600 पाउंड्स ओके। plus ओके। 3,000 pound that the company has to pay to home office. So ओके। overall मिला के एक ओवरऑल। बंदे के तीन यस। साल के वीजे की overall cost would be 6,000 approximately pounds. सिक्स So थाउजेंड usually companies avoid that. Yes. बिकॉज आई हैव Sometimes, सम like फ्रेंड्स for हु example, मैं अपने व्हाट केस पे बताऊँ। यस। सॉरी, कंटिन्यू। आप बताओ, बोलो बोलो। आई नो अ फ्रेंड ऑफ माइन हु सेड कि मैंने अपने 7,000 पाउंड खुद भरे हैं। Yeah. That's the point where I was coming to. So I work for a public health sector. So NHS is a National यस। Health Service, overall UK की public health sector, and they are very cautious on where their funds should be spent. So usually वो यस। certificate of sponsorship तो issue कर देते हैं, but they do not ओके। pay the fee of the visa. तो ये और जो थ्री ओके। थाउजेंड को पे करने हैं to the home office, उसके लिए भी वो ready यस। नहीं होते, ठीक है, ओके। most of the time. So what I did was मैं applications के लिए apply करता था, literally reached to the final stages of multiple organizations. They were like, love your हम्म। profile, excellent work experience, everything is great, but we cannot sponsor the visa. And उस time पे rightly so, graduate visa was a very 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 new thing. तो ओके। HR को usually पता भी नहीं था, अब तो they पता are नहीं well होता, हाँ। aware, they would know, यस। yeah, so they would know. Now the things have changed, so now if they really want you they can sponsor you. So हम्म। उस टाइम पे they were like कि we don't know the process and we'll see. और फिर रिक्रूटमेंट ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है वो इतना डिले कर नहीं सकते, उनको चाहिए होता है तो वो ब्रिटिश नेशनल को ही बेसिकली हायर कर लेते हैं। मेक सेंस। मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने अप्लाई टू NHS as a procurement specialist, so उन्होंने they loved my profile and they said that we cannot sponsor. However, हम्म। जब तक आपका ये स्टूडेंट वीज़ा, ये ग्रेजुएट वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, you can work for us. एंड एट द ओके। सेम टाइम यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ काम करते करते, और अगर कोई और स्पॉन्सर कर दे आपको, सो वी वुड बी हैप्पी टू लेट यू गो, ठीक है। और फिर उसके बाद व्हेन आई जॉइंड ऑफिशियली इन जून ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो हम्म। they really liked my performance in the first month, और फिर सेकंड मंथ के अंदर कॉन्वर्सेशन उन्होंने HR से स्टार्ट कर दी कि यार इसका वीज़ा अगर स्पॉन्सर करने का है तो क्या तरीक़ेकार होगा। So ओके, वो conversation अंडरस्टैंडेबल। start होते होते after 3 months they were ready to sponsor me, but they said that we would not be paying the application fee. We would only pay ओके। give you the certificate of sponsorship, which is just 200 pounds. ओके। फिर हमने अप्लाई किया and they were chased by Home Office to pay 3,000 pounds for 3 years, which they ओके। ultimately did, but they were not willing to. डेड। ओके। So ओके। they paid, but I had to अंडरस्टैंडेबल। pay for my visa fee. And now I'm calling my wife and kids over here, so I had to pay for their visa fee as यस। well, which is equivalent to ओ almost माय eight गॉड। thousand pounds.
Yeah. Okay, interesting. So, what types of jobs are there for business graduates in UK? Is it easy to find because everybody is speaking English there? Is the competition high? Competition definitely is high, specifically from different South Asians जो कि यहाँ पे हैं और जो कि बहुत ज़्यादा हैं students. Chinese are like biggest competitors. और Hmm. बिजनेस ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारे ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हमारे आईबीए में होती थी, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स होती थी, Yes. ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते थे. सो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड ग्रेजुएट जॉब्स यूके. सो Okay. उसके अंदर आप देख सकते हो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स क्या हैं. एक टारगेट्स जॉब बहुत अच्छा पोर्टल है. यू शुड ऑलवेज साइन अप फॉर दैट. सो उसके अंदर डिफरेंट ग्रेजुएट स्ट्रीम्स की पोजीशंस आती रहती हैं. वो Hmm. एस्टिमेटेड सैलरी भी बता देते हैं, और क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, वो सारी डेडलाइंस एंड एवरीथिंग आर देयर अवेलेबल. सो मल्टीपल रिक्रूटमेंट प्रोग्राम्स हैं, बट अगेन आपने चेक करना होता है जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई करें. आप यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर जाके लिस्ट ऑफ स्पॉन्सरिंग वीज़ास के अंदर चेक करें कि वो कंपनी उसके अंदर लाई करती है या नहीं. तो अगर इफ़ दे हैव Okay, द interesting. लाइसेंस टू स्पॉन्सर द वीज़ा, then you should move Hmm. forward with that organization or the graduate program. And it's always good to ask the HR right away, क्योंकि काइंड ऑफ डिसहार्ट आप हो सकते हो कि आपने Yes. पूरा प्रोसेस किया, फाइनल भी आप सिलेक्शन हो गया, फिर वीज़ा स्टेटस के ऊपर दे आर लाइक कि वी कैन नॉट स्पॉन्सर द वीज़ा. सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप पहले से अपनी रिसर्च कर लो, एचआर को कांटेक्ट करके बोल दो कि भाई I'm on a student visa or graduate visa. What are the Okay. chances of it being converted to skilled worker visa? So that you have your expectation managed accordingly. बाकी LinkedIn is Understandable. your And best friend for UK. yes. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपने खुद ही आंसर कर दिया कि व्हाट इज द सीक्रेट इंग्रेडिएंट एंड दैट इज कि यार अपने वीज़ा की जो स्पॉन्सरशिप है ना उसको फिगर आउट कर लो किसी तरह. जॉब तो इवेंचुअली That लगी is जाएगी कहीं ना कहीं. exactly. So even in my batch, there are few people हम्म. जिनको अभी तक sponsored visa की जॉब नहीं मिली है, and their visa is ओके. expiring in December, and they might have to go back to their home countries. So ओके. it was tough for our batch, but I'm not sure how it's going to be like right now. या. और अब जो और पॉलिसीज आ रही हैं वो थोड़ी और टफ हो गई हैं. गवर्नमेंट हैज़ टफ हो अनाउंस्ड गई. द वीज़ा फ़ी इंक्रीज, और यस. ऑलमोस्ट डबल हो रही है वीज़ा फीस वगैरह भी, और IHS भी, टू cater the cost of living crisis that we are हम्म. in the UK. So yeah, these are all डू यू the काइंड ऑफ डू यू caveats. काइंड ऑफ नॉट रिग्रेट बट डू यू क्वेश्चन योर सेल्फ कि यार मैं यूके क्यों आ गया, व्हाई डिडंट आई स्टे इन द EU, और आर यू फाइन विद द डिसीजन? Uh, at this point in time, I'm fine because language ओके. barrier नहीं है, सबसे बड़ी बात है. और यस. alhamdulillah NHS in the job, I'm loving it, and हम्म. it's a good कि I'm contributing towards medical field considering my history. So of my नाइस. mother's liver transplant and all, so I wanted to contribute हम्म. to medical field, and this is the way that I'm doing. So I'm वेरी नाइस. satisfied with what I'm doing. और दूसरा ये है कि यस, जर्मनी के अंदर अगर लैंग्वेज बैरियर का इशू ना होता, इनशुल्डिगुंग के अलावा मुझे अब कुछ भी जर्मन याद नहीं रही है, दो आई टुक 2 courses बट आई हैव फॉरगॉटन, या. बिकॉज इन्वायरमेंट नहीं मिला यार. कमरे में ही बंद थे, It कमरे makes में sense. बंद I रह can के understand कितनी this जर्मनी very सीख well. लेते. सो Yeah. नाउ द सिचुएशंस आर डिफरेंट, एंड आई वुड ऑल्सो से कि जो भी इरास्मस की डिग्रीज के लिए आ रहा है स्टूडेंट, they are Hmm. also eligible to apply for job search visa in Netherlands for 1 year. So जो भी Erasmus की Oh, यूनिवर्सिटीज़ हैं interesting. उनसे जो Cool. भी ग्रेजुएट हो जाता है, so even now if I Hmm. want I can apply for the job search visa, which is my batchmates are doing actually. Okay. So वो Netherlands के 1 year का job search visa के लिए आप apply कर सकते हो, which is very cheap. I think 199 euros is the fee for that. So जो भी Yeah. Erasmus यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके जो graduates हैं they can apply for 1 year job search visa in Netherlands. Okay, let's talk about salaries now. And I have also heard this that UK में salaries overall कम है. Is this बहुत true? कम है. When we compare with बहुत Europe? अच्छा, बहुत कम है. बहुत कम है, And what is the reason, सिग्निफिकेंटली कम है. rationale behind this? Okay. Rationale I'm still looking for, but the thing is कि cost of living crisis, cost is increasing day by day. Everything, rent Okay. यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो deadly है, it's rent. So rent Yes. सबसे ज़्यादा आपका like contribute करता है, आपकी salary का major chunk rent में चला जाता है. Hmm. लेकिन जो salaries का यहाँ पे set pattern है वो ये है कि जो graduates की starting salaries होती हैं, usually they start Hmm. with £25,000 per annum is the starting. Okay. £25,000 per annum up until £30,000 per annum. And I'm talking about graduates who are coming from bachelor's or master's or PhD, irrespective of that. Okay. Graduates
जो आप रूट अगर ले रहे हो तो वो उसकी स्टार्टिंग सैलरी यही होती है, बट इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग वंस यू हैव जॉइंड और यू हैव बीन सक्सेसफुल। लेकिन स्टार्टिंग ओके, सैलरी जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो ये करेंगे। देयर आर सम प्रोग्राम्स जिनकी स्टार्टिंग सैलरी 40 grand 40,000 pounds, 40,000, 45 हाँ। 50 तक भी है। यस, देयर आर सम प्रोग्राम्स जिनकी 50 grand तक भी है स्टार्टिंग सैलरी, बट दे आर वेरी हम्म। competitive। बट जो ओके। ओवरऑल एक जैसे हम कहते हैं ना कि आईबीए के अंदर भी हम बता देते हैं कि भाई एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो है वो ये होगी, तो एवरेज स्टार्टिंग रेंज ऑफ अ ग्रेजुएट इज फ्रॉम 25,000 pounds to 30,000 pounds। So keep your expectations accordingly. Or if you have ओके। exceptionally well credentials and if you apply for Big Fours or something like that, so आपका यस। एक career path अच्छा चल सकता है। ओके। दैट्स वेरी सैड टू हियर, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई थॉट एटलीस्ट 40-50 हज़ार पाउंड तो मिलती होगी, क्योंकि 25 हज़ार में टैक्स आप काटने के बाद व्हाट विल यू टेक होम? 20% is the बट tax। Yeah, 20% इज अ टैक्स, ओके, नॉट बैड। yeah, यूरोप में 40 है yeah। अच्छा, मैंने उस सुना हिसाब से हम है थोड़े बच जाते हैं। ओके, सैलरीज में लो बॉलिंग बहुत होती है, और मैंने ये भी सुना है कि वहाँ पर क्योंकि इतने सारे इंटरनेशनल्स हैं, इतने सारे देसी बॉयज भी घूम रहे हैं वहाँ पे, सो पीपल गिव यू, कि वो कहते हैं कि यार ओके, मुझे 5,000 कम में बंदा मिल रहा है, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना तो मैं उसको ले लूँगा। इज दिस ट्रू? आई हैवंट एक्सपीरियंस्ड इट पर्सनली, लेकिन मेरा हम्म। जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अप्लाई किया है वो सैलरीज के बारे में बहुत ट्रांसपेरेंट रहे थ्रू आउट, और उन्होंने ओके। अपना बजट रेंज बताया कि इट्स फ्रॉम दिस हम्म। टू दिस, एंड देन इट डिपेंड्स ऑन ओके। योर एक्सपीरियंस और योर नेगोशिएशन स्किल्स, इसके ऊपर आप कर सकते हो। तो ओके। एक ऑर्गेनाइजेशन पे आई ऑल्सो रीच टू दैट स्टेज व्हेन आई डिस्कस्ड द सैलरी, बट देन एट द एंड ऑफ द डे वीजा कैन नॉट स्पॉन्सर, सो सॉरी फॉर या, दैट। सो मेक सेंस। या, So फॉर is पब्लिक it like a good decision ऑर्गेनाइजेशन, to just do you think is it a good decision to just buy the visa and just start the job? क्योंकि हर कोई इसी बात बाय पे द जो है वो वीज़ा, कंप्लेन कर रहा है। यस, बाय द वीज़ा के बारे में मैं आपको अभी बता दूं, बहुत सारे लोग ये करते हैं। बाय द वीज़ा वाली जो चीज़ होती है वो केयर फैसिलिटीज़ के अंदर होती है, केयर होम्स हैं यूके के अंदर, जिसके ओके। अंदर गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी हुई है ऑन वीज़ा कॉस्ट एंड एवरीथिंग। सो इट कॉस्ट ओके। देम नथिंग, the care homes owner cost them nothing to issue the visa, but they are selling for like 20,000 pounds, 15,000 pounds, 10,000 ओके, pounds for इंटरेस्टिंग। desperate people who want to stay in the UK। यस। लेकिन आई वुड नॉट of course recommend that, because वो रिकमेंड रूट जो दैट। है, that work is basically आप नर्सिंग कर रहे हो, और जो हम्म। सारी चीज़ें आप एल्डर पीपल को जो है वो बस केयर यस। किए जा रहे हो, और इट्स नॉट अ डिग्निफाइड sort of a job I would say after मेक studying सेंस। from Erasmus or thing। लेकिन people do tend that, who are desperate to not want to go back to their home country, they take that route, they pay hefty amounts। लेकिन इसके अंदर there is हम्म। always a risk कि अगर होम ऑफिस को पता चल गया सोर्स कहीं से भी कि you ओके। have purchased this visa, then you could be detained and sent back to your home country। So I would ओके। personally not recommend purchasing the visa or work permit। ओके, यस, ये कैन एक आप आई चीज़ कर गेट, सकते हो कि आप यस, ऑर्गेनाइजेशंस सॉरी। को कह सकते हो कि भाई आई एम रेडी टू पे फॉर माय ओन वीज़ा फी, आप जस्ट ओके। स्पॉन्सर कर दो। सो दैट इज़ वन कॉम्प्रोमाइज़ दैट यू कैन मेक विद द एचआर, एंड आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि अगर इस बेसिस पे आपका रिजेक्शन हो रहा है कि भाई वो पे नहीं करना चाह रहा है एप्लीकेशन फी, तो ऑलवेज हम्म। गिव देम द ऑप्शन कि इफ दैट इज़ द ओनली कॉज व्हिच इज़ कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ हिंड्रेंस, आप जो है आई एम विलिंग टू पे हम्म। माय ओन वीज़ा फी, और आप जो है ऑन बस वीजा मुझे फी। स्पॉन्सर ओके, कर दें, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट दे दें। understandable. Direct job from Pakistan or from EU, from Gulf, let's say if I'm living there, can I get a direct job in यस, the UK? डेफिनेटली डेफिनेटली यस। बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो करती हैं इस तरह से, और काफ़ी लोग हम्म। आए भी हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, तो अगर आपका पास्ट ओके। एक्सपीरियंस अच्छा है, इंटर कंपनी ट्रांसफ़र भी बहुत सारे लोगों का होता है, ओके। विद इन दिस ऑर्गेनाइजेशन ही आप जो है वो कर सकते हो। सो दैट्स कम्प्लीटली पॉसिबल, हम्म। इट्स नॉट मतलब कि इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। अगर आपके क्रेडेंशियल स्ट्रॉन्ग है, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग है और आप अप्लाई करते हैं, लिंक्डइन आई वुड अगेन इनकरेज कि लिंक्डइन इज़ अ वेरी 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 good tool, उसको effectively utilize करें, direct reach out to HR managers and talk to them, and they're very open, और आपको वो respond भी करेंगे, आप उनसे बात करें, प्रोफाइल पसंद आएगी तो definitely they would hire directly as well। Cool. But again, not extremely easy, you would be competing with the whole world in direct Exactly. applications। And the world who is already sitting there as well, वो भी एक मसला है। Exactly, So exactly। आपको बहुत ही competitive होना beat that Yeah, market.
All right, nice. Where to look? I think we already discussed this. LinkedIn is one, and a couple of LinkedIn, other. Can you Target quickly name Jobs, them? Target Jobs, Target Jobs, LinkedIn, Target jobs. Indeed, Hmm. और Indeed. डिफरेंट यहाँ पे जो है ना अलग वेबसाइट्स भी बनी हुई हैं जैसे जॉब ग्रेजुएट जॉब्स यूके करके भी एक वेबसाइट है जिसके ऊपर वो Okay. स्पेसिफिकली सिर्फ जॉब उसका बनाते हैं एंड देयर आर अदर वेबसाइट्स अवेलेबल जो कि उन एम्प्लॉयर्स को लिस्ट करती है जो कि स्पॉन्सर करते हैं वीज़ास को सो यू कैन राइट यूके टियर 2 वीज़ा स्पॉन्सरिंग कंपनीज जॉब्स Okay. समथिंग लाइक दैट सो देयर Very आर nice. सम पोर्टल्स जो कि लोगों ने बनाए हुए हैं बनाए हुए हैं. but the most Is there active any is specific? Reads, Yeah. Sorry. Targets, Reads. Reads, Hmm. Target, Indeed, and LinkedIn. LinkedIn. All right. Thanks. What about a specific CV format? Do we have anything specific? क्योंकि जैसे यहाँ पे यूरोपास का मशहूर है. Do you have anything like that? There is nothing specific CV format that they follow. It should be simple, like white background and black. That's Okay. it. So colorful वगैरह को यहाँ पे इतना appreciate नहीं करते. That's my personal experience. So a Okay. plain white word-based document, one pager is what they One appreciate and pager. look for. Okay. Cool. I don't think we have any questions on the Sorry, chat regarding these. one additional thing that I'd want to mention. I think for local and Erasmus scholarships now it's mandatory कि वो Europass based CV हो आपकी application में. I'm not Okay. sure, 100% sure about that, so please recheck that. मेरे time पे इस तरह की वो requirement नहीं थी. Any CV would be accepted at my time of application. But I heard from last year or a year ago, लोग कह रहे हैं कि अब Erasmus में Europass CV format they are accepting only. So All right. cross check that. Okay. Thanks for this topic as well. Second last topic which we have for today's discussion is how is life as a student in the UK? अगर मैं एक student हूँ पढ़ाई कर रहा हूँ, how is life? Is it very stressful? Do I have to worry a lot? दो तरह के स्टूडेंट्स होते हैं आई वुड लाइक क्लासिफाई इनटू टू डिफरेंट स्ट्रीम्स जो कि मैंने देखी Okay. है और पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया है एक है जो कि वाकई पढ़ने के लिए आ रहे हैं और उन्हें पढ़ना है Okay. ठीक है सो Hmm. क्योंकि यहाँ पे यूके के अंदर मास्टर्स प्रोग्राम आई एम नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट एरास्मस में ओवरऑल मास्टर्स की बात कर रहा हूँ सो यहाँ पे 1 ईयर मास्टर Hmm. प्रोग्राम होते हैं यूजुअली एज कम्पेयर टू यूरोप जहाँ पे दो Okay. 2 ईयर्स के भी मास्टर्स प्रोग्राम होते हैं सो दे आर वेरी Hmm. कॉम्पैक्ट और थोड़े से रॉबस्ट होते हैं लाइक यू हैव टू turn in assignments very frequently. So if you're very much Hmm. into academics or if you want to score better, which doesn't matter, A, लेकिन अगर आपने जो है वो पढ़ना है वाकई तो फिर इट इज़ अ लिटिल चैलेंजिंग लेकिन अब जो मैं सेकंड स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ दूसरे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि आते हैं सिर्फ टू गेट द डिग्री एंड टू लुक Hmm. फॉर द फ्यूचर करियर एस्पिरेशंस और मतलब यहाँ पे रहने के क्या तरीके हैं और वीज़ा कैसे लेना है और पासपोर्ट वगैरह की तरफ किस तरह से जाना है वो क्या करते हैं Yes. वो पढ़ तो रहे होते हैं बट इतना फोकस उनका पढ़ाई की तरफ नहीं होता और दे लुक फॉर डिफरेंट ऑल्टरनेट अर्निंग वेज Okay. तो यूजुअली Makes वो sense. रेस्टोरेंट्स वगैरह के अंदर काम कर लिया कोई और जॉब्स मिल गई Yes. इस तरह से कर लिया इंटर्नशिप्स के हवाले से आई वुड से दैट यहाँ पे इंटर्नशिप्स आर नॉट एज easily available as they are in Pakistan कि स्टडी के Hmm. दौरान आप इंटर्नशिप्स वगैरह की ट्राई करते हो यहाँ पे अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स होते हैं बट वो यूजुअली उनके लिए होते हैं जो कि थोड़े से टेक्निकल फील्ड के अंदर होते हैं तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सॉर्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप होती है मतलब दे डू नॉट पे यू बैक बट वो आप कंपनी के साथ Okay. लग के कुछ एक्सपीरियंस ले रहे होते हो और वो आपसे अपने काम निकलवा रही होती हैं लेकिन दे डू नॉट पे यू एनीथिंग सो उस तरह की भी प्रोग्राम्स होते हैं सो उसके Okay. अंदर इफ़ यू पार्टिसिपेट बट दैट वुड नॉट बी वैलिड फॉर एरास्मस बिकॉज एरास्मस में आप एक लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंट्री में स्टे नहीं करोगे Yes. सो इट्स एंड नॉट व्हाट वैलिड ओवर अबाउट देयर तो ये तो जॉब्स की बात हो गई सो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और पढ़ाई कर रहा हूँ कैन आई डू दीज टुगेदर क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेसफुल लगता है व्हेन अ स्टूडेंट इज स्टडीइंग इन द यूके आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेसफुल कि यार पता नहीं कैसे मैनेज कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी बिकॉज दे वर्क ऑन द वीकेंड्स मैं कहता हूँ भाई तुम सारा का टाइम काम कर रहे हो तो पढ़ाई कब कर रहे हो यार इज इट लाइक काम दिस ज़रूरी है स्ट्रेसफुल क्योंकि महंगाई की ओके वजह से महंगाई बहुत काम है ज़रूरी हो जाता है अब तो बहुत ही हो गई ओके है बहुत ही ज़्यादा हो गई है अब तो यू कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वर्किंग अलॉन्ग विद योर स्टडीज़ अनलेस यू आर फिल्थी रिच तो हम्म इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जो है वो बगैर जॉब किए यहाँ पे पढ़ाई करो तो जॉब तो करनी पड़ती है ऑलराइट मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो है वो सिक्योरिटी वगैरह की जॉब करते हैं जिसके अंदर आपके यस मल्टीपल आवर्स आपको देने होते हैं पूरा पूरा दिन आप जो है वो हम्म घंटों सिक्योरिटी की जॉब कर रहे होते हो उसके साथ पढ़ाई मुश्किल हो जाती है बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल आई यस हैव सीन पीपल डूइंग इट and getting good ओके grades also.
लेकिन कुछ लोग ओवर कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं एंड आई हैव सीन दोज़ केसेस एज़ वेल जिसमें लोगों की कुछ कोर्सेज़ के अंदर वो फेल हो गए और उसकी वजह यस, से उनकी यूनिवर्सिटीज़ ने हाथ उठा लिए कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप जाएँ अपने होम कंट्री पे, आपने जो डेडिकेशन अपनी प्रॉमिस की थी। अच्छा एक और चीज़ इरास्मस के अंदर जैसे स्टार्टिंग में डिस्कशन था कि एक इस तरह का कोई बॉन्ड नहीं होता कि आपने अपना होम कंट्री के अंदर आना है आफ्टर ग्रेजुएट, लेकिन ये ज़रूर होता है ओके, कि एक सर्टेन लेवल ऑफ ग्रेड्स आपने मेंटेन करना है। अगर वो आपने मेंटेन नहीं ओके, किया तो वो स्कॉलरशिप वाले भी हाथ खड़े कर सकते हैं। So हाथ खड़े कर सकते हैं, ओके, for that reason you have to perform good at certain bar. आपको एक specific grades लाना ज़रूरी है to continue the ओके, scholarship. अंडरस्टैंडेबल, अंडरस्टैंडेबल। What are the PR and passport timelines in the UK? Very asked questions on the group. Yeah. So तो PR कितने टाइम में मिलती टाइमिंग है? ये होती है पीआर का टाइम आपका तब स्टार्ट होता है जब आपके पास स्किल्ड वर्कर वीज़ा या टियर 2 स्पॉन्सर्ड वीज़ा आता है। ओके, ठीक है, योर स्टूडेंट टाइम इज़ ओके, नॉट काउंटेड टुवर्ड्स पीआर। और जब आप टियर 2 वीज़ा पे 5 ईयर्स स्पेंड करते हो इन यूके ऑन टियर 2 स्किल्ड हुँ, वर्कर वीज़ा, उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। वो कहलाता है आपका परमानेंट रेजिडेंसी, तो आपको रेजिडेंसी स्टेटस ओके, मिल जाता है आफ्टर 5 years। यस, एंड आफ्टर गेटिंग ओके, दैट indefinite leave to remain, after 1 year, 1.5 year or 2 year depending on your circumstances कि आपने टैक्स पेइंग कितनी एफिशिएंटली की थी, हुँ, कोई आपके ऊपर कोर्ट में केस वगैरह तो नहीं, हाउ क्लीन योर प्रोफाइल यस, इज उस पे डिपेंडेंट होता है, क्रेडिट स्कोर रेटिंग आपकी किस तरह की है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उस हिसाब से आपको फिर आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हो और आपको 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर पासपोर्ट मिलता है। सो ओवरऑल जर्नी कुछ टू गेट द पासपोर्ट कुड बी एनीवेयर बिटवीन 6 to 7 years, ओके, अंडरस्टैंडेबल right एंड from the point where you get the skilled worker visa. स्किल्ड So वर्कर I'm वीज़ा, तो just स्टूडेंट वीज़ा keeping you काउंट नहीं होता? reminded it. So yes, student visa हुँ, भी count नहीं होता, graduate visa भी count नहीं होता. So for example, ओके, I started my master's degree in 2019, 2019, 20, 21, 22, 23. ये जो 4 साल विल मैंने नॉट student काउंट, visa पे यस, और graduate visa पे गए हैं, they're not counted. So my नॉट skilled काउंटेड, worker started in March, so अब मेरा start होना शुरू हुआ. So that is one यस, thing. इन And या there इन are जर्मनी फॉर rumors. एग्ज़ाम्पल इट्स अ बिट डिफरेंट, Yeah, if there are या rumors, not rumors exactly, but bill पे discussion चल रहा है in the parliament to extend this 5 year period to 8 years. It's not yet finalized, वाओ! but there is a possibility in future कि या दैट दिस ये कुड हैपन, 8 साल पे चला जाए, तो वो 10 साल की कहानी भी हो सकती है। वाओ! फिर आप जिस अप्लाई तरह से करोगे, अभी फिर करंटली मिलेगा उन्होंने, तो और या यस, या मेक सेंस, कूल, पेरेंट्स इंटरेस्टिंग, यस, पेरेंट्स का आई वुड से कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के ऊपर अपने पेरेंट्स के लिए अप्लाई किया था और अपने मैंने इन लॉज के लिए भी अप्लाई किया था। सो माई ओके, फादर इन लॉ, मदर एंड फादर, बट द थिंग इज कि यस, मेरे फादर की, बिकॉज इट वॉज ऑल सो क्विक अप अंटिल सितंबर एंड आई वाज नॉट श्योर कि हम लोग यूके जाएंगे भी या नहीं, कॉन्वोकेशन होगी भी या हुँ, नहीं। इट वाज सो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। सो नवंबर में जब मुझे पता चला कि भाई हम ये कर रहे हैं, सो उसी वक्त क्विकली जो है वो फिर फादर मदर के लिए वीज़ा अप्लाई किया, अपने इन लॉज के लिए मैंने ओके, अप्लाई किया। बट मेरे फादर का जो बिजनेस नेचर है उसमें उनकी बैंक स्टेटमेंट वाज नॉट मेंटेन्ड, so that was the only ओके, problem because of which they didn't get the visa. My parents didn't get the visa, but my in-laws got the visa to come and attend my ओके, graduation ceremony. So they were here, but मेरे parents का नहीं हुआ था. But UK is not very friendly to issue the visas to parents unless they have very 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 strong ties back to their home country कि उनका ओके, बिजनेस है या वो काम कर रहे हैं। आपने अगर 100% ये चीज़ नहीं दी स्ट्रांगली, आपने एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया कि यू हैव स्ट्रॉन्ग टाइज बैक टू योर होम कंट्री और आप वापस चले जाओगे, हुँ, यूके यूजुअली पेरेंट्स के वीज़ाज के ऊपर इश्यूज करता है। दिस इज़ वन ऑफ द ओके, रीज़न आई डोंट लाइक यूके particularly. ओके एंड बट इन द लॉन्ग टर्म कैन वी इनवाइट आवर पेरेंट्स टू द यूके? वेरी डिफ़िकल्ट बट ओके, नॉट इम्पॉसिबल। सो आपको पता है यहाँ पे पाकिस्तानी, इंडियन, साउथ एशियन यस, कम्युनिटी कितनी ज़्यादा है और सबकी ही यही कोशिश होती है कि पेरेंट्स आ जाएँ, पेरेंट्स आ जाएँ। सो देयर आर हाँ, मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड दे टेक नो मतलब हीट टू रिजेक्ट द वीज़ाज़। तो वो विज़िट वीज़ा दे देते ओके, हैं, वही होता है कि 6 महीने का, फिर आप वापस चले जाओ और फिर दोबारा एक्सटेंशन के लिए हो, हुँ, तो 10 साल का एक साथ भी मिल जाता है समटाइम्स इफ यू आर लकी इनफ। लेकिन यू कैन नॉट स्टे इन फॉर मोर देन 6 months और 3 months, आई एम नॉट श्योर। तो इस तरह का सीन है यहाँ पे पेरेंट्स का।
All right. So thanks a lot, Ovis. We have last 3 points to talk about, and we are already up over the time. एक घंटे का session होता ही है, but it's like 1 hour 10 minutes. I would like to ask you कि कौन से ऐसे challenges थे which where when you went through whole of this process. I would like to ask you कौन से ऐसे दो challenges थे, एक specific to study related and the second one specific to work related, which you mentioned other than the sponsorship of the visa thing. सो स्टडी रिलेटेड चैलेंज जो मेरे लिए था वो ये था कि आई वुड रिकमेंड कि जो भी सोच रहे हैं यूके आना और इसमें तो अपनी थोड़ी सी एकेडमिक रीडिंग और एकेडमिक राइटिंग को इम्प्रूव करना शुरू कर दें अभी से सो दैट यू डू नॉट वेस्ट टाइम एंड यू नो हाउ टू डू दी साइटेशन व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइटेशंस और Yes. वो सारी चीज़ें आप सीख के आएँ तो आपको बहुत आसानी होगी वरना Cool. यहाँ पे साइमल्टेनियसली करना इट वुड बी डिफिकल्ट सो दैट वाज माय फर्स्ट चैलेंज राइट एट द स्टार्ट बट आई एम नाउ वेरी गुड Hmm. एट इट सो दैट इज द डिफरेंट Okay. थिंग दूसरा चैलेंज वर्क रिलेटेड अगर है तो it's visa related only. I wouldn't say that working over here is tough. I found it It's tough. more Okay. relaxing as compared to Pakistan. Hmm. Comparing my experience working in PNG और जैसा मैंने वहाँ के लोगों को देखा है कि वो किस लेवल के उनका वर्क लाइफ बैलेंस बिल्कुल ख़राब हुआ होता है खराब हुआ उस होता है. हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए ओवर हेयर द वर्क लाइफ बैलेंस इज pretty much manageable. It's Hmm. good over here. That's my Very personal nice. observation. Cool. और फैमिली के लिहाज से कैसा है यूके? गुड वीज़ा If you को want to अगर rate साइड में your कर rate दो your- वीज़ा की कॉस्ट हाँ वीज़ा की Okay. कॉस्ट वगैरह को अगर साइड में कर दो तो इट्स वेरी गुड बिकॉज इतना कोई कल्चरल शॉक या डिफरेंस फील नहीं होगा बिकॉज देयर आर सो मेनी साउथ एशियन Okay. Nice. कम्युनिटीज ओवर हियर सो यू एंड लैंग्वेज इज इंग्लिश सो इतना फार अवे फ्रॉम होम फील नहीं होता एंड इट्स जस्ट लाइक राइट अक्रॉस द कॉर्नर आप जो है वो फ्लाइट पकड़ो आई एम इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी 2-3 months Okay. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो ट्रैवल और कर सो सकते हो. या इट्स गुड फॉर फैमिलीज Very nice. Second last point I have is that do you have any advice for students who are listening to this call? and planning to apply for the scholarship, I would Yes. say try to get as much experience as possible. Internships वगैरह Hmm. multiple अगर कर सकते हो तो करो during your studies और Yes. अगर possible हो एक international exposure लाजमी ले लो. That really helped because I Okay. say that by fact कि मैंने जैसे बताया कि मेरे बैच के अंदर there were 10 people who got the scholarship out of Hmm. 32 तो उन 10 के पास एक इंटरनेशनल एक्सपोजर था इट कुड बी And यू what do नो you mean by एनी international exposure exactly? Like ISEC किसी type cheese? कॉन्फ्रेंस को या आईएसएक हो गया Okay. या किसी कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया हो इंटरनेशनल आउट ऑफ योर होम कंट्री एंड यू मेट Hmm. डाइवर्स पीपल डाइवर्स बैकग्राउंड पीपल ओवर देयर या आपने कोई सेमेस्टर एक्सचेंज किया हुआ हो जैसे Hmm. I personally had a UGrad semester exchange program in my profile and NUS National University of Singapore exchange program in the summers. So ये Hmm. दो मेरे पास एक experience थे. इफ़ नॉट किसी तरह से पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर मेरी एडवाइस ये होगी कि आप अपने इंटरनेशनल ट्रैवल इंटरैक्टिंग विद इंटरनेशनल पीपल को ज़्यादा हाईलाइट करो बिकॉज दे आर सीकिंग फॉर दोज पीपल हु आर कंफर्टेबल Okay. different cultures and diversity. That is the one key thing that they are looking for in an individual कि एक exposure to the international community उनके पास हो. And if you do Very not have interesting. an international exposure, you can try to communicate it that way कि भाई आपका कोई फेसबुक के ऊपर पेज आपने बनाया हुआ है जो आप रन कर रहे Hmm. हो आप डाइवर्सिटी को डिस्कस करते हो या आपने Yes. अपना वर्क एक्सपीरियंस के अंदर यू हैव कॉन्टैक्टेड डिफरेंट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज इन Different डिफरेंट background. Yeah. रीजन्स सो सम वे यू शुड से कि आपका जो है वो इंटरनेशनल एक्सपोजर है either Hmm. physical or virtual but you have the exposure so that would help you with your application. That is one Cool. thing. Last Two question I things. have for you is that do Yeah. you have any advice for working professionals in general, Working not professionals specific के लिए to आपने इतना एक्सपीरियंस लिया जिंदगी में आप 500 कंट्रीज चले गए ये कर लिया बट व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू अ वर्किंग प्रोफेशनल हु इज 24 year old let's say and hmm, who wants to look forward to the world coming to him. don't get disappointed would be the main thing. Keep on applying, keep on trying. After n minus one rejections, you would get there. So do not You would lose get hope there. and keep on trying, and every
ट्रायल दैट यू डू, आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा उससे। कुछ ना कुछ की पॉइंट पता चलेगा, कुछ ना कुछ एचआर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ पता चलेंगी जो कि आप यूटिलाइज़ कर सकते हो इन योर नेक्स्ट application. And the world is open, keep trying, or Keep nothing trying. is impossible. It's difficult, challenging, yes, very challenging, but not impossible, so keep trying. All right. Last question I have for you. Very last. It says, do you Yes, have any advice for me? continue doing the work that you're doing, man. I'm so happy to have you in my life. Zabardast bande ho, Okay. bahut behtareen kar rahe ho for people around, and I really like your initiatives. जो भी initiatives आप ले रहे हो, amazing. It's always Cool. Thanks a inspiring. lot. आपका Keep हमारा doing तो the बहुत great पुराना work. कनेक्शन है. Yeah, definitely. और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, they can reach me out through LinkedIn or Facebook. So I'll try my best to answer any specific questions if you have. And all the very best. Cool. Yes, thanks a lot, Oves, for your great time Most here. Great welcome. discussion. I learned a lot personally, and also people who asked a lot of questions regarding Erasmus, about jobs in UK, about all of these things. It was very helpful, and I'm really thankful to you that you took out your time on a Sunday morning where you said, "क्या मुझे सुबह 8 बजे उठाओगे?" Yes. So for everybody here, you woke up at 8 a.m. So thanks a lot for that. And I would like to end the call here by saying that I will share OS ka LinkedIn on our WhatsApp group, जो हमारा WhatsApp group है study work related. And if you guys want to reach out to him, have any specific questions, please reach out to him. I will also share our support community groups, जो कि Germany specific है, EU specific है. If you want to come here for studying or for working, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं टू सपोर्ट टू कम हियर, ताकि आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं पड़े टू कम हियर, एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ योर मनी एंड योर पेरेंट्स मनी अगर आप उनके पैसे पे पल लें तो. एंड लास्ट पॉइंट वी हैव हियर इज प्लीज सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल. व्हाई नॉट? बिकॉज हमने 1 घंटे Please do. 16 मिनट लगा लिए, बट यस, एक सब्सक्राइब बटन पे हिट कर दें, सो दैट वुड रियली हेल्प मी टू ग्रो द चैनल हियर. So thanks a lot, everybody. We will end the call here. And once again, thanks, Oves, for giving us your time. Most welcome. Most welcome. Thank Happy to you. help. Bye. Thank Yes. you. Bye.